My name is Mohammad Yasir Khan. I am a student of 10th standard of Asufa Grammar School. Today, I am here to explain probability. So, what is probability? Probability is nothing but possibility of an outcome from a random event. किसी भी चीज़ के होने का आप अंदाज़ा लगाना उसको probability बोलते हैं. Probability is always measured between from 0 to 1. Probability हमेशा 0 और 1 के बीच में measure होती है. Probability can't be less than 0 और greater than 1 and impossible event की probability always 0 रहती है और possible outcome की probability 0 से बढ़ के रहती और 1 तक जा सकती. 1 जो है sure event है. एग्जाम्पल एक एप्पल है, उसको ट्री से गिरना है, या तो कच्चा या तो पक्का, मगर उसको गिरना है तो एक sure event है, तो उसकी probability 1 है. Probability impossible event की probability एक एग्जाम्पल, there are 8 days in a week. No, there are only 7 days. So this is the probability of impossible event because there are only 7 days in a week. Okay, you understand this? Okay, mathematicians make a formula to know the probability of higher numbers, that is number of favorable outcomes by all total possible outcomes. Let's apply this formula on a coin to know what is the probability of getting a heads. So, number of favorable outcomes. How many number of favorable outcomes are there? Only one heads are in a coin there. Okay. Now, all total possible outcomes. How many possible outcomes are there? 1, 2. So, 1 by 2. So, the value of 1 by 2 is 0.5. Only there are 2 outcomes. So, 1 is 0.5. So, also another is also 0.5. And 0.5 plus 0.5 is equals to 1. And 1 is a sure event. So, there are equally likely chances of coming and heads and tails too. So, we can say that probability of getting a heads when we coin a choice is equal to probability of getting a tails also. Okay, now I have 2 erasers. Sure, color this teacher. I am just shuffling them. Okay, now tell one hand name, right, left or right? This one. Okay, इसमें कौन सा eraser है? Right, absolutely. This is known as mutually exclusive event. Occurrence of one event prevents the occurrence of another event. एक का होना दूसरे को रोक रहा है, इसको बोलते हैं mutually exclusive event. Okay, I am again shuffling them. Now you tell me what is the probability of getting a black eraser from this? Yes, absolutely. This is known as impossible event and probability is 0 because I don't have black eraser. So where probability used? Why we learn it? So probability is used in stock market. You also use in your home. If you invite some people to your home as फंक्शन. सो आप कितने लोगों को बुला रहे हो और आप कितने लोगों का खाना पका रहे, आप एक अंदाजे से पकाते हो, वो भी एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है. और प्रोबेबिलिटी मेडिकल में भी यूज़ होती है. कोई शख्स बीमार है, उनके ठीक होने के पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं और उस बीमारी में मुब्तला रहने के पॉसिबिलिटीज़ कितने हैं, वहाँ यूज़ होती है. और वेदर फोरकास्ट में यूज़ होती है. आज पानी पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है, आप बाहर छतरी लेके जाना नहीं ले जाना, ऐसा प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. इफ़ यू आंसर यू विल गेट अ चॉकलेट एज अ रिवॉर्ड. ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी, जो हो ही नहीं सकता? ओके, आई हैव 2 ऑप्शंस फॉर यू, 0 and 1. सॉरी, आंसर इज रॉन्ग. 0 बिकॉज वो हो ही नहीं सकता. एग्जाम्पल, देर आर 32 days in a week. How there are 32 days in a how there are 32 days in a month? It is impossible. Okay, so this is probability. Thank you.